Hello, everybody. Greetings from Zeal Wellness. So, this is registered dietitian Sakina here, the founder of Zeal Wellness and your health and lifestyle mentor. So, today we are going to talk about diabetes. Yes, it's been worldwide, and every third, fourth person that you meet has sugar issues. Okay, they do complain of having either low sugar levels quite a lot of times in the day, and certain other diabetics that we meet, we definitely they complain of having high sugar levels, specifically early in the morning. So Zeal Wellness is here at your rescue. What are we going to learn today is we are going to learn about what are the signs and symptoms of being a diabetic, what are the short-term complications that people face, what are the long-term complications of being a diabetic, how can we prevent diabetes from occurring in our family. Okay, so if your parents are diabetics and you want that you should prevent yourself from getting diabetes as a hereditary disorder, then definitely there are certain steps that you need to take, and we are going to teach you that today. And in the end, we will definitely look at certain superfoods which would help you to control your sugar levels and a typical diet of how a diabetic should follow. We're going to cover all of this in today's session. So, are you ready? Great. Let me just share my screen and let's go ahead with what I want to share with you today. Okay. So here it is. Yes, Zeal Wellness is where energizing health and celebrating life is our motto since 2015. And me being a registered dietitian and the founder of Zeal Wellness have been practicing since 2011. And we are attached at Baikala as well as all the other clinics that we visit on appointment basis only. Great. So to start with, for our diabetics, this is what a start that I wanted to give is the colors that I have used over here. Everything has a symbolic view on it. Why have I used these colors? Because it indicates that a diabetic should include colorful fruits and vegetables in their diet to control their sugar levels. Okay. To move ahead, let me take you through what I mean. Before we start that, what exactly is diabetes and, why do people, there are certain myths that people have, all that we're going to cover. A basic thing that I wanted to cover today is what is health? What is health according to you? Okay, is it that, I'm fit and fine, I can do a lot of work, I go to work every morning and come back in the evening, and that's where I find myself healthy? No. What I personally believe is health is a mixture of all of this: physical health, social health, spiritual health, and mental health. Creating a balance between all of these four is very, very important. Okay. How optimum are your body functions happening, especially, or digestion problems, how well is your immunity, how socially well connected are you, do you meet your friends often, are you suffering from any kind of emotional issues, mental issues, depression, how easily do you meet people and greet them and share your thoughts with them, and yes, how well spiritually connected are you? So how often do you go to pray, and how often do you talk about prayers and all of this with people around you? So this is very, very important to create a balance and to maintain your health in life. Okay, moving next, what is diabetes? Now, when a layman person is asked, अरे high sugar level जो होता है वही बस उसको diabetes कहते हैं. So yes, that is a very minor thing, and then people say that हमें वहाँ पे मीठा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, and the moment you say I'm a diabetic, and there are like n number of things that people will tell you that do this, don't do that. So what you have to do is that you have to take an informed decision by yourself that what is good for you and what is not. Okay, yes, it's a chronic condition
where there are abnormally high levels of sugar, that is the glucose in the blood. Okay, now what happens in diabetics is the insulin which is produced by the pancreas, okay, what they do is they lower the blood glucose levels. But if there is absence of this production of insulin, or there is insufficient production, okay, or the third condition where the body cannot use these insulin properly in your blood levels, then definitely diabetes occurs. Okay, so these are the three things that happen. Any one of this can happen. What are the early signs and symptoms? Tingling, there's numbness in the hands and the feet, increased thirst, आपको बार बार प्यास लगने लगेगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपको मीठी चीजें खाना ज्यादा पसंद आएगा, and you'll be like मुझे गुड़ चाहिए या मुझे कुछ मीठा चाहिए. So yes, those increased hunger pangs and thirst will increase. Then there's frequent urination. You will definitely, because increased thirst and you drink a lot of water, you will feel that you need to visit the washroom again and again. You will get tired very, very easily. That's because there's not there's insufficient sugar levels in the blood sometimes, which occurs leaving a bloodstream, lack of sugar in the bloodstream, which again the body cells need energy to perform every activity, and you feel very, very tired. Okay, and there's blurry vision. So excess of sugar in the blood can damage the tiny blood vessels in the eyes, which may lead to blurry vision. So these are certain signs and symptoms that diabetics have to look forward for. Next up, the most common myths that we hear is, does eating too much of sugar cause diabetes? Absolutely not. So eating too much of sugar does not cause diabetes. Diabetes begins when something disrupts your body's ability to convert this food that you eat into energy. So जो खाना आप खाते हो वो अगर शुगर में नहीं बदल रहा है, और अगर वो आपका जो बॉडी का इंसुलिन है वो शुगर को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता है, तो आपको डायबिटीज होने की आवश्यकता है. Okay, fine. What are the short-term complications? If definitely you forget to take medicines, अरे डॉक्टर साहब डायबिटीज की तो अभी मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, ऐसा हमने सुना है, मैं एक बार नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? Definitely बहुत कुछ हो सकता है. So yes, there could be high sugar levels in the blood. If you're going out for a meal out, or you've been invited in some function and you're like, अरे आज थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ, it's okay, चलेगा. Nahi, you have to make sure what is the portion size that you're having, what are you having, how much are you having. Okay, that can definitely affect your sugar levels in the blood. Lack of exercise. Exercise is an extremely important part. जैसे आपकी सारी बॉडी के हॉर्मोन्स अच्छे से चलते हैं अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो. Every day, indulging yourself in some kind of physical activity is very, very important. आपके जो खाने से जो शुगर बनता है उसको बॉडी को यूटिलाइज कैसे करना है वो आपके एक्सरसाइज लेवल पे डिपेंड करता है. जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना अच्छे से आपकी बॉडी शुगर प्रोड्यूस भी करेगी और उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करेगी. ओके, स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस. जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, हर एक की जिंदगी में स्ट्रेस है डेफिनेटली, उसमें कोई मनाई नहीं कर रही हूं मैं, बट the more stress आप जितना लोगे उतना आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे, उतना आपकी इंसुलिन पे अफेक्ट होगा, इनडायरेक्टली आपके शुगर लेवल्स पे अफेक्ट होगा. एंड फाइनली जितना आप बीमार पड़ेंगे, फीवर, इन्फेक्शन, छोटे से कोल्ड, कफ, फ्लू, उतना आपके शुगर लेवल्स पे असर होगा. लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, कंटिन्यूसली अगर आपके ब्लड लेवल्स में शुगर लेवल्स हाई रहते ही है तो आपके काफी सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि हार्ट एंड ब्रेन, वेयर डेफिनेटली चांसेस हार्ट अटैक के, ब्लॉकेज के, स्ट्रोक के ज्यादा है. आपकी नर्व्स, जहां हमने बोले कि वो टिंगलिंग इफेक्ट जो होता है, आपके हाथों में नमनेस आ जाती है, आप ऐसे हाथ नहीं कर पाते हैं, तो वो नर्व्स को अफेक्ट करता है. आपके काफी सारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो नर्व्स अफेक्ट हो रहे हैं. सो अगेन हाई शुगर लेवल्स विल अफेक्ट योर नर्व्स. आपकी किडनी पे डेफिनेटली असर हो सकता है. ओके, देयर कुड बी लॉस ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, आपकी किडनीज डैमेज भी हो सकती है. आईज, आंखों में ब्लर्ड विजन इज वन स्मॉल प्रॉब्लम.
बट अगर आप लंबे समय तक डायबिटिक हो तो आपको फ्रीक्वेंटली आपकी आई चेकअप्स कराते रहना चाहिए, बिकॉज the diabetes high sugar levels can affect your eyes very fast. It can lead to retinopathy. एंड फाइनली मैक्रोवास्कुलर डैमेज, जो गैंग्रीन जिसे हम कहते हैं, जहां पे आपको यदि पैरों में या कहीं पे चोट लग गई, उसको हील होने में बॉडी बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि आपके शुगर्स हाई है ब्लड में इस वजह से। आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन इतना नहीं पहुंचता है जितना पहुंचना चाहिए, और उस वजह से वो पार्ट हील किए बिना ही रहता है, और उस वजह से वहां पे वो सूजन बढ़ती रहती है, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं और गैंग्रीन हो जाता है, टू दी एक्सटेंट कि शायद वो पार्ट आपका कट भी करना पड़े, जैसे कि आपके पैरों की फिंगर्स है, आपका पूरा पैर है, anything and everywhere that can be affected. So long term अगर आपके sugars high रहते हैं, you really need to take care of your other functions of your body. Okay, fine. Moving ahead, so this is a picture that I wanted to show कि diabetes ये सारी चीजों को affect आगे जाके कर सकती है. Diabetic neuropathy, retinopathy, cardiomyopathy, diabetic foot, diabetic nephropathy जहाँ kidneys are affected, and obviously stroke in the brain. Okay, so the first and foremost step is for a normal individual जिनको कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, no signs of diabetes, but family history run करती है diabetes के लिए. So these are the things you should do to prevent yourself from diabetes. Try and include आपके खाने में more fiber rich foods, जैसे कि सारे fruits and vegetables. वॉच आउट कि आप कितनी रोटी, कितना राइस, कितना पास्ता, कितना पिज्जा, कितना ब्रेड, कितना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो, जैसे कि नाचनी, ज्वार, बाजरा, ये सारे सीरियल्स, ग्रेन्स आप कितना ले रहे हो, वॉच आउट ऑन दैट. स्मोकिंग यदि कर रहे हो, प्लीज स्टॉप इट. मेंटेन योर पोर्शन साइजेस. विटामिन डी लेवल्स अच्छे होने चाहिए, जिससे आपका योर हार्मोनल लेवल्स आर इंटैक्ट. आपकी कैल्शियम इनटेक कितनी हो रही है दिन में, वो उसको विटामिन डी कंट्रोल करता है. सो एंश्योर दैट आपका विटामिन डी अच्छा है. डू अ स्मॉल लिटिल ब्लड टेस्ट, यू विल गेट टू नो द लेवल. अगर कम है, एक छोटा सा कोर्स करना है, उसको करेक्ट करना है. ओके, काफी सारे सुपर फूड्स है जिसे हम आगे आएंगे, जैसे कि मेथी सीड्स है, जामुन है, शिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है. ये सारी चीजें आपकी डाइट में इंक्लूड करिए. आपकी शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, जैसे कि मैदा है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, डीप फ्राइड फूड्स, ये सब अवॉइड करना है. अगर वेट मेंटेन नहीं हो रहा है, इफ यू आर ऑन द हायर साइड ऑफ द वेट, प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योर वेट एंड गेट इट डाउन. एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, एंड आपको देखना है कि प्राइमरली आप पानी कितना दिन में पी रहे हैं, एंड ओवरऑल आपके लिक्विड इंटेक दिन में कितना है. Stay well hydrated so that all your body functions are proper. Okay, next up, these are the superfoods that I wanted to discuss. So soluble fiber, मेथी सीड्स में है, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है. बिटर गॉर्ड, जिसे हम कहते हैं करेला, सो दैट इज वेरी गुड. उसमें चेरेटिन है, जो आपकी शुगर्स को कंट्रोल कर सकता है. हल्दी पाउडर, करक्यूमिन है उसमें, जिससे आपकी पैंक्रियास रेगुलेट कर सकता है, जहां पे आपका इंसुलिन बनता है. ओके, अलसी, वेरी गुड इन ओमेगा 3, वेरी गुड इन soluble fiber. It manages your sugar levels also, controls your cholesterol levels also. Jamun ka powder, extremely good to improve the insulin sensitivity. Now what is this? इंसुलिन आपकी बॉडी में है, पर वो शुगर पे काम नहीं कर रहा है, मतलब वो सेंसिटिव नहीं है. सो जामुन पाउडर इंक्रीजेस दिस सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन. एंड लास्टली, pumpkin seeds. Now pumpkin seeds are also very good to control your sugar cravings. जो लोग बार बार कहते हैं कि मुझे कंट्रोल नहीं होता है, मुझे हर एक मील के बाद थोड़ा कुछ मीठा चाहिए, सो पंपकिन सीड्स को दिन में आप इंक्लूड कर सकते हैं. आपके मिड मील्स में 1 चम्मच ले सकते हैं, बादाम के साथ ले सकते हैं, आपके सैलड्स के ऊपर आप उसको डाल सकते हो. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इफेक्टिव. ओके, नेक्स्ट I was talking about fruits and vegetables. At least दिन में 2 से 3 servings होने चाहिए. ज्यादा से ज्यादा seasonal fruits आप try कीजिए every time, every day.
The red, yellow, orange, green, purple colored fruits and vegetables are very good. उसमें antioxidants बहुत अच्छे होते हैं. So these are very good for diabetics. Okay. The only fruits that are really high in sugar levels and should be controlled are banana, custard apple, mango, grapes and chiku. Okay. उसके अलावा सारे fruits आप खा सकते हैं यदि सही टाइम पे खाना है उनको आपको एंड सही पोर्शन में खाना है. ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करना इतना जरूरी है क्योंकि आपके हार्मोन्स को वो कंट्रोल करता है, आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो. आपका अगर वेट कंट्रोल करना है उसमें भी एक्सरसाइज आपको मदद करेगा. सो आपका वेट डाउन हो सकता है. आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको डी स्ट्रेस करता है. जितनी भी आपको स्ट्रेस हो, इश्यूज हो घर पे, आप यदि एक वॉक पे जाएंगे या जॉग पे जाएंगे या स्टेशनरी साइकिल है घर पे या ट्रेडमिल है या योगा करेंगे, all of these are very very good and very very beneficial for your health. एंड द बेस्ट पार्ट इज एक्सरसाइज करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, दिन अच्छा जाता है एंड रात को नींद भी अच्छी आती है. ओके. बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, कौन से टाइम पे कर रहे हो, यू हैव टू बी श्योर दैट उसके पहले और उसके बाद आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो. सो डेफिनेटली प्लानिंग योर डाइट with a dietitian is very very important over here. Okay. How should you make your plate? So for when you're sitting to eat, आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी प्लेट में प्रोटीन्स जैसे कि आपकी जो चिकन, दाल, एग, फिश, पल्सेस, ये सारी चीजें जो है वो कितना होना चाहिए. So 1/4 of your plate has proteins, 1/4 has your roti, rice or pasta or nachni, bajra, jowar, any of this, dalia, all of this. Vegetables is completely half of your plate is vegetables, and 1 glass or a cup of dahi, chas, milk, raita, which is outside the plate. Okay, so this is how your meal should look like, your lunch and dinner. Okay. Next up, so some healthy food swaps जो आपको मदद करेगा. Sweetened drinks के बदले पे you can definitely switch that and replace it with water or unsweetened tea. Chips and pretzels के जगह पे crisp non-starchy vegetables like sweet peppers, celery, carrots, they are all good. Full fat dairy products जैसे कि buffalo milk और उसकी जो products है उससे replace करना है आपको low fat या fat free dairy products. Sour cream जहाँ use होता है you can replace that with Greek yogurt. It's much better in protein and very good in calcium. आइसक्रीम खाने का मन है, इससे अच्छा फ्रोजन योगर्ट ले सकते हैं या दही को और फ्रूट को मिक्स करके स्मूदी बना के आप गार्निश कर सकते हैं नट्स के साथ और वो ले सकते हैं. बटर एंड सॉल्ट जो हम जहां जहां फ्लेवर के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं लेमन जूस से. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट वी हैव वन टिपिकल डेज मील जो एक डायबिटिक के लिए अच्छा हो सकता है. दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस. इट डज नॉट मीन कि आपको यही ऐसा ही फॉलो करना है. हर एक एवरी बॉडी इज डिफरेंट. आपकी हाइट, आपकी एज, आपकी हेल्थ इश्यूज के हिसाब से आपका डाइट प्लान होना चाहिए. सो पोर्शन साइज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ओके. So typically a breakfast would be either one beverage. With that you can take कॉम्बिनेशन में या तो एग रोटी है या सीरियल मिल्क है या पोहा एंड मिल्क है, एनी वन ऑफ दिस ऑप्शंस. बीच में मिड मील्स यू कैन आइदर हैव फ्रूट्स, नट्स, कोकोनट वाटर. लंच अगेन आइदर सैलेड, विद दैट रोटी, सब्जी, दाल एंड दही, और रोटी, सब्जी, चिकन एंड दही, एनी वन प्रोटीन ऑप्शन दैट यू वांट टू चूज फ्रॉम. इवनिंग में tea, coffee or whatever beverage you want. You can take green tea, you can take blue tea, you can take chamomile tea, and uske saath either a dal khakra or some chana or a moong chila or any of the pulses that you have. You can have a besan chila if you want, because protein evening में लेने से आपके शाम के sugar levels controlled रहते हैं. And dinner is absolutely same as lunch.
preferably little lesser in portion size, and you start your lunch and dinner with salad so that आपका fiber intake अच्छा है. आप ज्यादा पोर्शन रोटी या राइस का नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप सैलड्स ले रहे हैं, एंड प्लस उसमें ज्यादा आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है. फाइबर इंटेक ज्यादा होने से आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल्ड रहते हैं. Okay, so this is typically that you can follow a diet in the day. Okay, so here comes the contest time. I want you to download the crossword which is there in the email and solve it. Click a picture, WhatsApp it on this number, and submit it as quickly as possible and grab a chance to win a gift hamper. Okay, great. So this is it from my end. The last thing that I wanted to share is a product which is very much tried and tested with a lot of patients, diabetic patients. It's called the sugar control powder, which is from this company called Healing Herbs. So very much effective and absolutely natural, nothing artificial. So any doubts regarding this powder, if you want to order it, you want to try it, you want to refer a diabetic patient to this powder, please do get in touch with me and I will correctly guide you as to when to take, how much to take, everything. Okay. Thank you very, very, very much. All the very best. And I just hope that, you make certain lifestyle changes that are necessary for you to maintain your sugar levels, to prevent diabetes, and also share this information with other diabetics that you know. Any other doubts that you have, anyone who wants to plan the diabetic diet with Zeal Wellness, I'm just a call away with all the contact details that are given to you and shared with you. Take care and all the very best once again. Hope to see you soon. Bye-bye.